Namaste, Khushamdeed. Good evening to everyone. Everyone of you who has joined today here, I welcome you all to this session, which is a very important session. And the topic is close to everyone because everybody is scared about their children because everything has opened up. Children are going to school, they are really happy, and we are looking at a little surge in the number of cases. I am Dr. Vinny Kantru. I am a consultant in respiratory critical care and sleep medicine in Indraprasth Apollo Hospitals, New Delhi. And I am your host and host every Wednesday here with you on Wednesdays with Vinny Kantru on Med Talks. This is a daily non-stop show catering to your medical knowledge and your questions. We try to solve every of your question and give you the best possible answer and solution. So today we are into the 640th episode of Dr. KK's Med Talks, which is a commendable task by itself. Thank you to Dr. KK Agarwal, who started this legacy of spreading the right amount and the right kind of information which is related to medical field. So let's have the headlines of the day. So again, we are looking at increase in the number of COVID cases, and this is why we have chosen this topic today, which is there an impending fourth wave? How are children getting affected? And the way ahead. We will be letting you know the common precautions and everything about COVID appropriate behavior, which needs to be followed meticulously to get these numbers down again. Amid the fourth wave of fears, the center has written to five states, including Haryana, Uttar Pradesh, Mizoram, Maharashtra, and Delhi, over the rising COVID 19 cases. And they have asked them to continue monitoring the spread of infection and undertake the requisite amount of steps to be prompt and effective against the management of COVID 19. Also, the mask mandate is back, and you will be fined rupees 500 if you're not wearing your mask in public place. And this includes not wearing your mask appropriately. So please make sure that you are wearing your mask on your nose and that is appropriately covered. The global COVID caseload has topped 505.8 million cases, while the deaths have surged to more than 6.20 million. And the good thing is that vaccinations are over to 11.19 billion. Our children are getting vaccinated, which is a very good and commendable news. Soon we will hear that 100% of our children are vaccinated with two doses. Scientists have allayed the fears of new COVID-19 wave, saying that the rise in number of cases is expected because we have opened up everything, including international travel, lifted the restrictions which were there on public places, including restaurants, and opening up of schools. So this kind of surge is actually expected, but we also in the hospital are not seeing any kind of surge in hospitalization, which is a good news. About 30% of COVID 19 patients develop long COVID symptoms, which is being seen by a US study which was done in the United States. Now, this mostly includes the severe cases who go on to develop the moderate to severe kind of symptoms, unlikely in mild, but it is not entirely ruled out in mild cases of COVID 19. About 33 kids among 107 new COVID 19 cases have been found in UP's Gautam Budh Nagar. Now, this means that one third of the cases which are being tested are children in Gautam Budh Nagar. This is why we are here. And the topic for today is COVID 19 impending fourth wave, children, and the way ahead. So let's go to the topic of the day. I welcome you all who have connected to us. And now I would like to welcome my guest today, who is an eminent speaker and a very senior doctor in Indraprasth Apollo Hospitals, New Delhi. His name is Dr. Amit Patel.
Thank you, Welcome Dr. to the Vinny. session, sir. Thank you so much for joining us and taking out your valuable time on such a short notice. But I really wanted your valuable opinion since the COVID 19 cases number is on a slight rise, and we are every day hearing that in schools also there is a small surge in the number of children who are reporting upper respiratory symptoms. I would like to introduce further Dr. Nameet Jairath, who is a senior consultant in pediatric critical care and pulmonology in the Department of Pediatrics in Indraprasth Apollo Hospitals, New Delhi, since 2006. He has trained in pediatric emergency medicine from Australian College of Emergency Medicine and did his fellowship in pediatric critical care at the Sydney Children's Hospital, Australia. He also did pediatric critical care fellowship at the Hospital for Sick Children in Toronto, Canada. Before he returned to India, of course, he completed all these fellowships, and we are glad that he did return to India. His areas of special interest include fluid and electrolyte management, mechanical ventilation, cardiac critical care, neonatal, and pediatric bronchoscopy. He is also a faculty for DNB Pediatric Critical Care, IAP College of Pediatric Critical Care, Medvarsity, and the Sydney Children Health Program. So, welcome, sir. And we start with the very important question of whether there is actually a surge in the number of cases and are the children involved here now? So, first of all, thank you, Dr. Vinny, and it's a commendable job that you're doing here, and it's a pleasure for me to be back with on your show with you. Now, coming to your question, are we seeing a surge of patients? Yes, the numbers are showing an increase, and there's no denying the fact that the numbers are going up. Uh, but we also have to see what type of patients are we seeing. Are we actually seeing more sick patients, or these are more of an incidental finding that because we have tested them and we have found them to be positive, we know that these numbers are increasing. So the good news so far is that most of the cases that have been detected are mild cases, and they are not uh, sick enough to even need hospitalizations. As you said yourself in your opening statement, we are not seeing a surge in the admissions. The hospital facilities, the beds, they are not stretched to their limits. So that is a good sign. But but we cannot deny the fact that the numbers are increasing, and we have to be a bit cautious about it. So, as a parent, sir, even I am concerned that we have been having the reports of children getting affected with upper respiratory symptoms. Now, they are reporting cough, cold, sore throat, fever, and they actually have to stay back at their place, which is a good thing. Every parent is actually educated enough to keep their sick children at home. And through this medium, both of us, and of course, I'm sure you would also reiterate that any sick children who has fever and upper respiratory symptoms should be held back at home and should not be sent to the school to prevent the spread. But now, if somebody is unknown or they develop the symptoms at school, should parents be actually worried, or what is the way out? How can we actually send our children to school? Because children have suffered the most in terms of loss of their studies, loss of social interactions. We cannot actually go back and close down everything just for the fear of children, children getting affected. So how this message is to be taken, and how can we be calm at our place? Very rightly said. I mean, children have suffered. They are kids who have not seen the natural routine of schools. They are 4, 5 year old kids who have never been out of their homes, and they don't know the normal social interaction. But beneath all of this, it is all for a greater good. This is all to protect our children. It is all to help them have a better life later on. So we are aware of these issues that children are facing, but we also have to understand that all of this has been done with the greater good in mind. So hopefully the worst is behind us. Hopefully we won't see a surge of the dimensions or the proportions of the second wave again, and hopefully this is just a dying phase. But children,
will have cough colds. When they mix with each other, they are going to have more of these complaints. So far, kids were holed up in their homes and houses. They were not intermingling with others. So the infections, even the usual viral infections, were very less in the community. And as they have started going out, intermingling with their peers, and bringing back infection home, the incidence or the complaints of the usual cough, cold, fever, runny nose has increased. Now, the problem is it is very difficult to just clinically differentiate whether this is just a usual viral common cold or is it the beginning of the COVID. And for this, precisely this reason, that clinically it is very difficult to differentiate, uh, a caution abandon is advised. It is better that if the child has any fever, cough, cold, it is better to be on the safer side and not send the child to the school, so that we protect the community as much as possible, while still allowing the schools to remain open, by still allowing the children to go to schools and intermingle and carry on with their routine activities. The schools would be understanding about that. If any parent calls into the school and says that the child is unwell, I'm sure no school would be penalizing on terms of attendance and all these stuff, because it is in fact for the larger good. So this situation or this conditionality would probably continue for a bit longer, and we as parents, we have to be careful about our children. If our child is unwell, it is better to keep the child at home till things get better. And if your child has symptoms which are unusual, has more severe symptoms, has cough with breathlessness, or if you're concerned, forget about the symptoms, you're not happy the way your child looks, you should consult a doctor. That is the bottom line, I think. This is a very important statement, Dr. Jared. So, mothers are very close to their children and they can catch a child's reaction very well, and they know when their children are unwell. So, even if you have this kind of feeling that your child is not looking very well because of the heat wave, also, even the fever can cause little amount of dehydration, which can be a cause of concern, and your child needing hospitalization just for the sake of extra amount of fluid which is needed for this heat wave. So if you feel your child is unwell, do contact your pediatrician and get back to them. Also, sir, just to have a detailed discussion on if some child, we have already discussed that a child who's unwell with upper respiratory symptoms should be kept at home. So, what is the latest guideline? How long should a child stay at home? And what all general precautions should be followed by the parents regarding the basic treatment if a case is of mild infection? So most of the children uh, with the normal cough cold or even with COVID would have mild symptoms, and the treatment remains symptomatic. So basically, the treatment is of fever. So you give paracetamol if there is fever, and keep the child well hydrated. If there are any symptoms of cough, runny nose, breathlessness, difficulty in breathing, it is better to consult a doctor. But hydration and paracetamol is something which can be done by the parents at home, preferably in consultation with a doctor, which you can, most of the doctors are very comfortable doing video consults or consulting online or over the phone these days. It is probably better to do that. Most of these symptoms, viral symptoms, they start resolving by the third to fourth day, and maximum by fifth day, things start getting better. Most viral infections, and COVID too is a viral infection, mild COVID infections too would start settling down by day 4, day 5. Any fever which is not settling, any symptomatology which is a group of symptoms which are not getting better by day 4, day 5, or things are worsening, that's a red flag. You definitely need to see a doctor, a consult with your family physician or pediatrician if such a condition arises. But most of the cases, and when I say most, I mean more than 90% of the children will start getting better by day 3, day 4, and they'll be much better by day 5. And somewhere around once the symptoms have settled, the fever has settled,
and the child does not have aggressive bouts of coughing, is a reasonable, safe time for the child to go back to school, which I would presume would be somewhere around day 7. So a week at home and back to school after a week. Right, absolutely important information there. Also, if a patient develops severe kind of symptoms, primarily what should the parents be scared about? And at once they should take their child maybe to the emergency to go to a hospital. And also the red flag, of course, you said the breathlessness is a red flag. But if somebody already has certain comorbidities, which parents should be more cautious towards their children if they have certain underlying conditions? And a part of this question only, sir, I'm just clubbing all the three questions so that there could be a continuity with our attendees at the moment. So we have actually seen that the number of hospitalizations in children, even in second and third wave, has not been very high. So just to reiterate and reassure our parents, please tell us that are you seeing a rise in hospitalizations, or which kind of children usually get into hospitalization and what can happen? So we have been, if I could use that word, lucky that children have not been affected severely across the waves of COVID. So even when the numbers were huge and children were getting admitted, there was a very small proportion of children with COVID who would need admission to the hospital. Most of them, most of the children would have mild symptoms which could be managed at home, and they would very rarely require admissions to the hospital. And even the children who were admitted to the hospitals, a very, very small fraction of those would need more intensive therapy or need intensive care unit admissions. So that is the brighter side of COVID for children, if I might put it that way. So that is very reassuring. And there is no reason to believe that any further infection waves of COVID, if it comes, would behave differently. So we are very hopeful that COVID, if it comes back or if it continues the way it is continuing, it will remain the same. Children will get infected, they will get affected, but it will be only a very mild infection and something that we would not need to worry for most of the children. Now, here is the second part of your question. Some children, unfortunately, because of their underlying conditions, might need more attention. Children who have chronic diseases, chronic as in long lasting diseases of the lungs, of the heart, kidneys, children who have some deficiency in their immunity, what we call as immunodeficiency disorders, children who are unfortunately suffering from some or other cancers and are on chemotherapies. So all of these diseases, certain medications, they make the body's immune system weak, and such children are more prone to having a more severe infection. Even amongst these children, luckily, COVID has not been very, very severe, but the worst cases that we have seen have been in children with underlying chronic or long standing diseases which are debilitating and already causing concerns. So, such children, if the child is suffering from any chronic disease, it is best to be very aggressive in consulting your doctors. Even the slightest of concerns, it is better not to do self medication. It is better not to be at home and to consult a doctor at the earliest possible. Most are in even these patients, most of them we would probably need to do nothing, but it would be better and safer to be on the cautious side and be more aggressive in seeking help from others or from the doctors. हमारे जो शोधा हमारे साथ जुड़े हैं जिनको अंग्रेज़ी इतनी समझ नहीं आती है, उनके लिए मैं गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी हिंदी में। डॉक्टर नमीत हमें एक अच्छी गुड न्यूज़ दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने जितनी भी हमारी वेव्स आई हैं, नॉट ओनली अक्रॉस द कंट्री, केवल हमारी देश में नहीं, बल्कि बाहर दूर देश में भी जितने भी वेव्स आई हैं,
उनमें बच्चे बहुत कम अफेक्ट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सीवियर डिजीज, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी ऐसे बच्चे बहुत कम थे। और उनमें से जिन बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही कोई डिजीज़ ऑलरेडी होती है और ये डिजीज़ काफ़ी टाइम से उन्हें हो रही होती है। ये डिजीज़ लंग की हो सकती है, आपके फेफड़े की, या फिर आपके किडनीज़ की, या लिवर की, या फिर कोई कैंसर की बीमारी जो बच्चों में इम्यूनिटी कम कर देती है, या इम्यून सिस्टम की ऐसी बीमारी जिसमें आपके इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो वायरस के साथ रिएक्ट करे। ऐसे बच्चों में भी देखा गया है कि उनमें से भी काफ़ी कम परसेंटेज है जिनको ये बीमारी जानलेवा तौर पे होती है। इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि हॉस्पिटल में केयर देने के बाद ये सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। और साथ ही हमने ये भी जाना कि मिनिमम जो ड्यूरेशन है जिसमें अगर आपके बच्चे को सिम्पटम्स है कोविड के या फ्लू के, तो उन्हें 7 दिन जो है घर में ज़रूर रखें। इसी के साथ हम डॉक्टर नमीत से ये भी जानेंगे कि क्या हर बच्चे में टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है? इज़ कोविड टेस्टिंग इम्पोर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ चाइल्ड एंड एवरी एज ग्रुप? नो, नहीं। कोविड टेस्टिंग जरूरी किसी और वजह से है, इस बीमारी को समझने के लिए, कंटेन करने के लिए, और ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें। तो जिसको हम एपिडेमोलॉजिकल रीजंस बोलते हैं, इस वजह से ये अभी ज्यादा जरूरी है। हर किसी कफ एंड कोल्ड वाले बच्चे को कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये डिसीजन आप खुद ना लेके अपने डॉक्टर्स पे छोड़े। अगर किसी को घर में कोविड हुआ है और कोई बच्चा कांटेक्ट में आया है या सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि कोविड की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का कोविड टेस्ट जरूर करना चाहिए। बट हर कफ एंड कोल्ड को अभी एज ऑफ नाउ, आज के तारीख में कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये हमें हमें जानना जरूरी है कि हम कितने कोविड केसेस देख रहे हैं। बट अगर ये कोविड केसेस माइल्ड रहते हैं, जो कि जैसा कि अभी हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली अच्छी न्यूज है। और ये हमें और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट्स को ये पता करने के लिए और अपनी फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोविड के नंबर्स जानने की ज्यादा जरूरत है। बट हाँ, हर किसी बच्चे को कोविड टेस्ट कराने की अभी जरूरत नहीं है। So every child doesn't need to get the COVID testing done at once. Please leave this decision for your doctor who will decide for you whether for your child the COVID testing is required or not. But if you're concerned about somebody at home who's elderly and due to any reason might not have taken their vaccination, in that case, to prevent the spread sometimes, your doctor might decide to get the COVID testing done, especially if your child is more than 2 years of age. इसी के साथ थोड़े हम सवाल ले लेते हैं। हमें दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूछ रहे हैं, मुझे वैक्सीन की दोनों डोज़ लग गई थी। वैक्सीन के बाद मुझे सेकंड वेव में कोविड हुआ भी था और मुझे दोबारा 21 जनवरी 2022 जो कि थर्ड वेव जिस समय चल रही थी, उस समय भी इनको कोविड हुआ था। तो क्या इन्हें बूस्टर डोज़ लेना चाहिए और कितनी देर के बाद जो है हार्ट की सर्जरी हो सकती है? तो अगर इनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, सो अभी एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक सेकेंड, आपके कोविड के इन्फेक्शन से 3 महीने वेट करके आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। बल्कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए, आपको बूस्टर डोज अभी भी लेना चाहिए। अगर जनवरी में आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है 2 डोज लगने के बाद भी, तो इसका ये फायदा जरूर रहा होगा कि कोविड माइल्ड हुआ होगा। और अभी भी आपको बूस्टर डोज लेना चाहिए। बूस्टर डोज स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि हार्ट की सर्जरी कब कराई जा सकती है, ये बेस्ट होगा कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, क्योंकि हार्ट की सर्जरी सिर्फ कोविड इन्फेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी हार्ट के कंडीशन, उसकी अर्जेंसी और बाकी अंडरलाइंग स्टेटस पे भी डिपेंड करती है। डॉक्टर विनी इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बता सकती हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ योर अंडरलाइंग कंडीशन। अगर सर्जरी बहुत ही अर्जेंट है, तो उस केस में हम वेट नहीं करते और पीपीई पहन के कई बार सर्जरी कर दी जाती है। यदि वेट किया जा सकता है, तो दूसरी लहर के बाद हमने देखा है, क्योंकि माइल्ड तरीके के सिम्पटम थे, तो 2 हफ्ता एक अच्छा टाइम गैप होता है रुकने के लिए। बल्कि जो पिछली वेव्स थी, इन प्रीवियस वेव्स वी वर वेटिंग फॉर अबाउट 4 टू 6 वीक्स for your symptoms to settle down completely. Still, we have found, Dr. Namit, many patients and many people coming to hospital who say हमारी वैक्सीन नहीं लगी है. एंड द अंडरलाइन कॉज, इफ यू आस्क देम, अगर उनका ये कॉज ढूंढा जाए कि क्यों वैक्सीन लोगों ने नहीं लगाई है, तो अक्सर वो ये बताते हैं कि उन्हें एस्थमा की प्रॉब्लम थी, या टीबी की प्रॉब्लम चल रही थी, या किडनी की कोई दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने वैक्सीन लगाना सही नहीं समझा, या उनको किसी ने बताया कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए अगर आपको कोई बीमारी हो। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसे बच्चे हैं जिनको कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए? तो अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार अगर कुछ है कोविड के अगेंस्ट, तो वो वैक्सीन है. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वी हैव अगेंस्ट कोविड. और कोविड के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, इसके स्प्रेड को कंट्रोल करने में वैक्सीन्स का हमारी कंट्री में इंटरनेशनली सबसे बड़ा योगदान रहा है. इट हैज रियली हेल्प कंटेन दैट इन्फेक्शन. सो कुछ बहुत ही रेयर कंडीशंस हैं जहां आपको कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए. वो बहुत रेयर हैं. सो इन जनरल अगर मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूं, तो सबको कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आपको कोई कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए. ये डिसीजन आप खुद या किसी थर्ड पर्सन के कहने पे मत लीजिए. ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके करीबी परिवार वालों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि घर में अगर किसी एक को भी कोविड इन्फेक्शन अगर होता है, तो वो स्प्रेड सबको हो सकता है. तो ये सिर्फ आपके खुद के नहीं, आपके परिवार के, आपकी कम्युनिटी के और एट लार्ज हमारे पूरे देश के स्वास्थ्य को बेटर रखने के लिए और कोविड को कंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा, कुछ बहुत रेयर कंडीशंस हैं जहां कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बट वो बहुत रेयर हैं. और ये बेस्ट है कि ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ें. Ask your doctor, discuss your condition with the doctor, and let him decide or her decide whether your child or you yourself should or should not take the vaccine. And let me assure you, most of these chronic conditions like asthma, kidney diseases, heart diseases, they are actually a reason to get the vaccine. वो ना लेने के नहीं, बल्कि लेने की वजह होनी चाहिए. जी, बिल्कुल, ऐसे लोगों में जो इम्यूनिटी बनती है वैक्सीन के बाद भी, वो इतनी रोबस्ट नहीं होती है। यही कारण है ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आपके लिए ही ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिनको क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, दे कैन समटाइम्स गो इंटू सीवियर काइंड ऑफ प्रेज़ेंटेशन, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कोविड से। इसलिए ऐसे लोगों को वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और यही वो लोग हैं जिन्हें तीसरा डोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरीली तीसरी डोज जो बनाई गई थी, ऐसे लोगों के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि इम्यूनिटी का जो इफेक्ट आ रहा था 2 डोजेज़ के बाद, बहुत अच्छा ऐसे लोगों में नहीं आ रहा था। Dr. Amit Patel is connected to us. He is a pharmacology specialist. He's MD in pharmacology, and he is saying good evening to you. He says COVID-19, does it cause any activation of autoimmune condition? What is your take on these kind of interrelation between autoimmune condition and COVID-19? So, good evening, Dr. Patel. Uh, I can talk for children. I am a pediatrician and I look after children. So we have seen a surge of autoimmune disorders. Um, in children, especially, there is an autoimmune condition, or a better term probably would be an auto-inflammatory condition post COVID. Sometimes it happens even after weeks of COVID, this syndrome which we call as MISC, or multi-inflammatory syndrome, in children. That is after a few weeks of having COVID.
and it is supposed to be a hyper-inflammatory state where your inflammation is just going overboard. It's in an overdrive and tends to affect many organs. And this is well known. It is well. We have had more concerns with this MISC than with COVID in children. We've had a lot of children, especially after the first and second waves, who had this inflammatory surge. So हाँ, ये autoimmune disorders कुछ कॉमन है. एक ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों में जो काफी कॉमन है ऐसे भी, जिसको हम कावासाकी डिजीज बोलते हैं. इसका भी इंसिडेंस कोविड के बाद बढ़ा है. तो ये कंसर्न या ये एक रिलेशनशिप तो देखा गया है कि आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड देयर हैज बीन अ सर्ज इन inflammatory disorders, autoimmune disorders. There are significant reports of arthritis, strokes, various other um, random cases of inflammatory disorders, even of SOGI, or systemic onset juvenile idiopathic arthritis, which is a condition of severe prolonged fevers in children, which have been associated with COVID. वो एसोसिएशन बहुत डायरेक्ट नहीं प्रूव किया गया है, बट पीपल आर सेइंग दैट दे आर सीइंग मोर एंड मोर केसेस ऑफ दीज autoimmune and autoinflammatory disorders after the COVID and during the COVID. So COVID is still teaching us a lot. I don't think we still know what exactly is directly or indirectly related, but I think most of us pediatricians believe that there is a surge or increase in these diseases after COVID. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, और आशा करते हैं कि ये जो नंबर है हमेशा कम रहे, स्पेशली बच्चों के लिए, जिनके लिए कि हम सब पेरेंट्स, सब लोग काफ़ी कंसर्न्ड हैं. पूजा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड शी इज़ क्वाइट कंसर्न्ड फॉर हर चाइल्ड. They started going to school. She contracted some stomach flu, and after a few days, she had cough. So she is now scared to send her child to the school again. Is her fear justified? And how should parents be fearless in sending their children to school, even after knowing that their colleagues or their friends might be affected with respiratory symptoms? Parents are getting affected. They think that मेरे जो बच्चे का फ्रेंड है उसको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे जो कि कोविड हो सकता है, तो क्या मेरे बच्चे को भी ये सब होगा? क्या मैं दोबारा इसको स्कूल में भेजूं? क्या दोबारा स्कूल बंद कर देने चाहिए? सो दिस फेयर इज वेरी कॉमन अमंग्स पेरेंट्स नाउअडेज. And very rightly so. So what Pooja ji is saying is a concern which is of many parents, which is not totally unfounded. उनका कंसर्न बहुत जायज है, बट थोड़ा सा हम, अगर मैं कोविड को भूल जाऊं, तो दिस इज हाउ बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी. बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, और हर वायरल इन्फेक्शन के साथ बॉडी में धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होती है. सो इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर किड्स, younger kids, somewhere till about 7-8 years of age, to have 4-5 episodes of cough, cold, mild fevers in a year. That is body's natural way of getting immunity. Now, because of COVID, the situation has changed, and we are advising parents to keep their kids at home if they have these symptoms. But we have to take solace in the fact that most of the children, even if God forbid they are exposed to COVID, will either not be infected, or if they are infected, will have a very mild disease. And if the child is stable, not having a cough or active fever, we should send the child to the school. So ऐसे बच्चों को हमें स्कूल भेजना चाहिए. जो कंसर्न है आपका कि उसको दूसरा इन्फेक्शन लग जाएगा, फिर से फीवर हो जाएगा, ये कंसर्न सही है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है. अभी तक के डेटा के हिसाब से हमें बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा सीवियर होने के चांसेस नहीं हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा. इनफैक्ट the bigger concerns which have started coming now are the effects of keeping kids at home. घर पे बांध के रखने का या इतने समय से घर पे रखने का अलग साइड इफेक्ट्स हैं या अलग इफेक्ट्स हैं जो बच्चों को
साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट स्कोलास्टिक। सो स्कूल हम सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते, हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को भेजते हैं। तो ये ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बच्चों का स्कूल जाना, बाकी फ्रेंड्स से मिलना, सोशल इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। और ये भी हमें इम्पोर्टेंट, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। जी, बिल्कुल सही। सोशल इंटरैक्शंस, बाकी सारे इंटरैक्शंस जो होते हैं पढ़ाई के सिवा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों की। दीपक शर्मा जी, आपका सवाल मैं लेना चाहूँगी। आप पूछना चाह रहे हैं मोलन्यूपिरावीर जो दवा है कोविड की, इससे कैंसर हो सकता है क्या? देखिए, इस बारे में ये बताया गया था कि इससे कुछ जो है डीएनए में चेंजेस होती हैं जिससे कि म्यूटेशंस हो सकती हैं। लेकिन ये म्यूटेशंस इस तौर की अभी तक नहीं देखी गई हैं जिससे कि कैंसर हो। लेकिन ऐसे लोगों में जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, यानी कि जिनका बच्चा प्लान करने की आगे एक प्लानिंग है, या जो जिनके पेट में ऑलरेडी बच्चा पल रहा है, ऐसे पेशेंट्स को हमने ये मोलनुपिरावीर मेडिसिन नहीं दी है, बल्कि जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं या फिर 60 से ऊपर के लोग हैं जिन्हें ज़्यादा रिस्क रहता है कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण सीवियर डिजीज़ में जाने का, उन लोगों में ये दवा हमने बेरोक से यूज़ की है और ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं मिले हैं। तो कैंसर से इस दवा को जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, कॉशन जहाँ पे बरतना है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है या यंगर एज ग्रुप है जो कि अभी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं या जिनके पेट में बच्चा पल रहा है। Tanuja Bisht ji has a very good question. She's asking a very appropriate and important question at this juncture. She wants to know the special precautions which, as a mother, she should be following in sending her child to the school. So I say this to everyone, and I'll say that again. There is responsibility at every level. So there is responsibility that we have as parents. There is responsibility that the school has. There is the responsibility that the local administration has, and right out to the government. So everyone has to play their role properly for this to be tackled appropriately and completely. Uh, हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को इनफैक्ट आप सबने भी देखा होगा, आई एम एक्चुअली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, देयर आर मेनी किड्स who walk into the clinic and the first thing they want to do is wash their hands with the hand rub, because they've been trained, they've been doing it repeatedly over and over again, so they know the importance. It is almost like at a subconscious level. So that is the type of uh, culture we need to ingrain in them, that they have to do repeated hand washing. Very small kids who are too young to take care of masks, they should not be enforced to have mask on. So kids who are say 2 3 year old, even if they are going to a play school, they should not be wearing masks. Any child who is not in a position to manage the mask, it is a choking hazard. So those masks are not to be used for such small children. But most of the school age going children, so children who are going to normal schools, who are 5 6 plus, they can understand the benefits of mask and how to handle the mask. We need to teach them how to wear a mask properly, covering their nose and mouth. Now, I understand it is very easy for me and people to be sitting and giving these lectures. Following this is very difficult, especially for small kids. It is very difficult for us to even expect that they will be keeping their mask on all through the day. But what we can do is we can ensure or enforce them, teach them. This is our part. Then the school, their teachers, people in the school who are there at various points, they can be looking at these, reinforcing these over and over again. So this is a gradual culture shift that is going to happen. I think we have to learn to live with masks on. We'll probably go the Japanese way, where people are used to wearing masks when they go out, and we should be ready to use or conform to this type of lifestyle for
at least some more time to come. So we should be teaching our children the same thing. This is one precaution. The other precaution is obviously to be actively looking out for symptoms in your child. If your child has any symptom, it is best to keep the child at home, not to send the child to school. And if you have any concern, seek a medical opinion. इसी को सर प्लीज हिंदी में रिपीट भी करें, क्योंकि कुछ हमारे श्रोता हैं जो हिंदी में इसको सुनना चाहते हैं. तो हम बच्चों को हम ऐसा क्या हमें बच्चों के साथ ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए, ये क्वेश्चन था. तो जैसा मैं ये कह रहा था कि हम सभी को इसमें अपना अपना हिस्सा अदा करना है. हम एज पेरेंट्स, स्कूल के अध्यापक, प्राध्यापक, एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल गवर्नमेंट है से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है. पेरेंट्स के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को मास्क सही ढंग से पहनना सिखाएं. जो भी बच्चे मास्क की समझ रख सकते हैं, और ज्यादातर 5 से 6 साल से ऊपर के बच्चों में ये समझ है कि मास्क कैसे रखना है, मास्क को कैसे कवर फेस पे रखना है ताकि नाक और मुंह दोनों कवर हों, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स. यही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल जाने के बाद टीचर्स पे चली जाती है ताकि वो एनफोर्स करें, वो देखें कि बच्चे मास्क ढंग से पहन रहे हैं. हम बच्चों को हैंड सैनिटाइजर के यूज का महत्व सिखाएं. हम उन्हें बार बार हैंड सैनिटाइजर यूज करने के लिए प्रोत्साहित करें. और कई बच्चे बहुत इजीली ये करते हैं, बहुत आसानी से उनमें ये नेचुरली आता है, ये टेंडेंसी आती है कि हर जगह जा रहे हैं तो पहले हैंड वॉश करते हैं, जो कि अच्छी आदत है. हमें इस आदत को थोड़ा और प्रोत्साहित करना चाहिए, थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए. कोशिश कीजिए कि जेल फॉर्म वाले सैनिटाइजर्स बच्चे के साथ बैग पे रहें. यही सैनिटाइजर स्कूल में भी अलग अलग पॉइंट्स पे स्कूलों में भी अवेलेबल रहते हैं. तो बच्चों को मास्क पहनाना और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, ये दोनों की एनकरेजमेंट ये हमारी तरफ से होनी चाहिए. इसके अलावा जो ध्यान हमें रखना है वो ये है कि अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम्स, कोई भी तकलीफ, खांसी, सर्दी, बुखार की दिखनी शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को स्कूल ना भेजें, बच्चे को घर पे ही रखें. और अगर हमें कोई भी शंका है, कोई भी कंसर्न है, तो अपने डॉक्टर से जल्द सलाह लें. एक और कॉमन सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि एक प्रैक्टिकल समस्या भी है आजकल के मौसम में, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों को जो खाना है हम साथ में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है और उसके भी सारे कंसर्न्स है, खराब खाना खाने के कारण ही उनकी तबीयत कई बार बिगड़ जाती है. सो जो मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स में, क्या उससे कोविड फैल सकता है? क्या बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि उन्हें अपने मील्स शेयर नहीं करने चाहिए, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सो खाने से हम अगर साइंटिफिकली बोलें तो खाने से कोविड फैल सकता है, बट प्रैक्टिकली देखें या जो केसेस आए वो देखें तो ओरोफिकल रूट या जो खाने के रास्ते से या पानी के रास्ते से कोविड का इन्फेक्शन की कोई सिग्निफिकेंट कंसर्न्स नहीं है. सो खाने के वक्त खाने से शायद कोविड नहीं होगा, मगर हाँ, क्योंकि खाना खाते वक्त आप मास्क उतारते हैं, आप सब साथ में बच्चे बैठते हैं और खाना खाते हैं, उस वक्त क्रॉस कंटेमिनेशन से कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय कि खाने की वजह से. सो खाना फिर भी हमें स्कूल्स में ये एनकरेज करना चाहिए कि जब बच्चे खाना खाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खाएं, क्योंकि उस वक्त मास्क उतरे होते हैं और उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि जब वो मास्क लगा के घूम रहे हैं. और बट मुश्किल भी, खाने से बच्चे क्योंकि खाने पे काफ़ी बॉन्ड करते हैं, तो बहुत बिल्कुल. मुश्किल से बेचारे बच्चे और एक-दूसरे से दूर रह पाते हैं। कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि घर पे बच्चा खाना नहीं खाता बट बाकी फ्रेंड्स के हुँ। साथ आराम से खा लेता है. और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो फूड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आता है. फूड एक्सपेरिमेंटेशन थोड़े यंगर एज में आता है, उसके बाद एक जो ग्रुप
फीडिंग का कंसेप्ट है, ये हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो जैसे डॉक्टर नमीत कह रहे हैं, यू शुड नॉट बी स्केर्ड टू हैव योर चाइल्ड द स्कूल फूड विच स्कूल इज प्रोवाइडिंग, because it is freshly cooked food, but do inculcate in your child that if possible, please maintain physical distancing from his friends while they are eating, at least for the time being. You can tell them once COVID is over, you will be able to bond with your peers and friends very readily. इस समय क्योंकि कोविड की लहर जो है ज़्यादा स्तर पे है, तो अपने बच्चों को ज़रूर समझाएँ कि अपने दोस्तों से दूर रह के खाना खाएँ, स्पेशली जब उनकी मास्क जो है वो नीचे है। दीपा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो खुद भी एक सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, और वो पूछना चाह रही हैं कि क्या स्विमिंग सेफ है? इज़ स्विमिंग सेफ दीज़ डेज़? सो बात स्विमिंग में भी वही है, अगर कोई इन्फेक्टेड है और स्विमिंग में सिक्रीशंस पूल में मिक्स होते हैं, सो अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उससे चांसेस इन्फेक्शन के डेफिनेटली बढ़ते हैं। सो अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस इन्फेक्शन के लेते हैं और इन्फेक्टेड या जिस किसी को भी कफ कोल्ड फीवर चल रहा हो, उनको हम अवॉइड करें, उनका हम स्विमिंग पूल्स में आना अगर अलाउ ना करें, तो बाकी चीजों की तरह, मॉल में जाने की तरह, बाकी जगह जाने की तरह ये भी लगभग उतना ही सेफ है। थोड़ा सा कंसर्न किसी कम्युनिटी ओपन एरिया में जाने से के बजाय पूल में जाने में ज्यादा है, क्योंकि उसमें सिक्रीशंस और इन्फेक्शन के क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क ज्यादा है। और शायद इसी वजह से अगर जब भी नंबर्स बढ़े हैं, स्विमिंग पूल सबसे पहले बंद किए गए हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें कंसर्न रहना चाहिए अगर हम स्विमिंग पूल्स की बात करें तो, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू स्प्रेड इज प्रॉब्ली हायर विद स्विमिंग और विद द पूल्स। जी, बिल्कुल, जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, इस समय आपको लगता है कंट्रोल की जा सकती हैं, तो उन पे कर्ब रखना बहुत ही ज़रूरी। जिसको कि मास्क पहनना भी जिसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि पब्लिक में एक गलत तरीके की धारणा बैठ गई थी, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने फ़ाइन जो है वो मास्क पहनने से हटा दिया। जो फ़ाइन है उसका हटाने का ये मतलब नहीं कि आपको अपनी मास्क पहनना छोड़ना है, बल्कि आपके अंदर अपने आप की ये अंदर से जागरूकता आनी चाहिए कि आपने मास्क जो है पब्लिक प्लेस में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, ज़रूर पहने रखना है। इसी तरीके से वंदना बोरा जी हमारे साथ जो जुड़ी हैं, वो कह रही हैं 60 प्लस का जो एज ग्रुप है, उन्हें बताया गया है कि 9 मंथ से ऊपर अगर उनकी सेकंड डोज़ हुई है, तभी उनको कोविशील्ड की डोज़ लगेगी। क्या इसको लेना उससे पहले पॉसिबल है या नहीं है? डॉक्टर विनय, आप बताएंगे इसका? जी, क्योंकि बिल्कुल, मैं ये सवाल लेना चाहूँगी। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको अगर 9 महीने नहीं हुए हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होना ऑनलाइन पोर्टल में बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से कि ये वैक्सीन नहीं लग पाएगी। लेकिन जैसे रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं, जिस तरीके से हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट तरीके के बूस्टर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो 1 हफ्ते में हमारे यहाँ पे शुरू होने वाली है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली रिसर्च डिपार्टमेंट में आप आ सकते हैं, जहाँ पे कि हम आपको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यदि आपको 6 महीने हो चुके हैं आपकी दूसरी डोज़ के बाद। तो ये एक तरीका है बूस्टर डोज़ लेने का, जिसमें कि मॉनिटरिंग भी आपकी होती रहेगी और ये देखा जाएगा कि आपकी जो वैक्सीन बनने के बाद इम्यूनिटी है, वो किस तरीके की बन रही है, और ये रिसर्च में काफ़ी हेल्प करती है। मेडिकल रिसर्च होना, रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वॉलंटियर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सारी वैक्सीन सेफ है, जो कि वर्ल्ड ओवर अब प्रूवन है और देखा गया है। तो ये बहुत ही आसान सी एक स्टडी है। आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम इसको इसके बारे में फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। सिमरन कौर जी कह रही हैं कि उनके बच्चे जो हैं, ही इज़ 9 इयर्स ओल्ड एंड दे आर हैविंग ड्राई कॉफ. He was already infected by the third wave in January. Can they catch COVID again? So this is a very common question everybody asking. Somebody getting a COVID.
do they feel really relaxed that for next 3 to 6 months their child or any particular person is not going to get the infection, and they can do any kind of thing including removal of their mask? So the risk of getting COVID again is definite. It is possible to get COVID infection again, and that is precisely the reason that we cannot lower our guards. We have to be guarded in terms of continuing all the precautions, masking, hand washing, social distancing, even after you have received or you have had the COVID or received the vaccination. The chances are that if you have had the vaccine or if you've had the COVID infection and your body has developed some immunity, even if you are exposed to COVID, you would either not have the infection, or if you have the infection, it will probably be a milder one. But this virus is a mutating virus. It can mutate. It can cause certain mild changes in its structure, and it can still infect a person who has actually already been infected by other people, other infections in the past. So it is very important that we continue to have our precautions, and yes, be aware that someone who is infected or vaccinated can get the infection again. And you'll hear many such stories. People have been infected in the first wave, second wave, third wave, even after two vaccines. So that is not very unusual. जी, बहुत ज़रूरी है आप इस चीज़ को समझें कि आप जो है कोविड के वायरस से अफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालाँकि अगर आपने अपनी तीनों डोज़ या 2 डोज़ भी ले रखी हैं वैक्सीनेशन की, लेकिन वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपको ये इन्फेक्शन होता है, तो बहुत ही माइल्ड तरीके का इन्फेक्शन रहता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है पेशेंट्स के साथ। पहली वेव में जब वैक्सीन नहीं लगी थी, तो काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं आईसीयू की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ जब हमने सेकंड वेव में देखा, यंगर एज ग्रुप जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अफेक्ट हुए थे एज अगेंस्ट एल्डरली जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी थी। इसमें आपका जो है थर्ड वेव में काफ़ी सारी पॉपुलेशन कवर हो चुकी थी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो वायरस था वो म्यूटेशन उसकी ऐसी हुई कि वो वीक हो गया वायरस, केवल ये रीज़न नहीं था वीकर थर्ड वेव का, बल्कि ये रीज़न ज़्यादा लाज़मी है कि वैक्सीनेशन की कवरेज काफ़ी अच्छी थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को माइल्ड तरीके का इन्फेक्शन रहा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। Somebody by the name of Billy, it's a very funny name, they have kept their login name as Billy. They want to know, is there any relationship between COVID vaccine and Guillain-Barré syndrome? Uh, so, to allay the fears, let me just put it this way: no. Uh, Many viral vaccines, especially the live viral vaccines, can sometimes cause a reaction and cause an autoimmune reaction in the body and cause diseases like Guillain-Barré syndrome, which is again an autoimmune disease. But the incidence is very, very less, and actually it is less than the incidence of Guillain-Barré syndrome as such in the community. So that should not be a reason of not taking the vaccine, that the vaccine increases the risk of getting a Guillain-Barré syndrome. That risk or concern is unfounded, and I think we should not be concerned of that side effect of the vaccine. तो रिस्क जो है गिलन बेरे सिंड्रोम का, जो कि एक नर्व्स की कंडीशन होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिस्क है। ये केवल इस वजह से नहीं होती कि वैक्सीन की वजह से किसी में प्रॉब्लम आती है, बल्कि आपके जो जेनेटिक्स होते हैं बॉडी के उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और केवल वैक्सीन ऐसी रीज़न नहीं हो सकती है जिससे कि ये नर्व की पैरालिसिस होती है, बल्कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है। तो इस कंसर्न की वजह से वैक्सीन जो है वो आप अवॉइड ना करें। जो वैक्सीनेशन की बात चली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी डिस्कशन को मैं आगे लेना चाहूँगी। हमने देखा है 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं काफ़ी हद तक, जहाँ तक मेरा जानना है। मेरे हिसाब से 70% जो है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है विद द सेकंड डोज़, इफ आई एम राइट डॉक्टर नमित। और अभी जो वैक्सीनेशन चल रही है,
14 से 16 साल के बच्चों की चल रही है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे कम एज के बच्चों की वैक्सीनेशन जो है कब होगी? जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, जिसमें प्रतिभा मित्तल जी भी हैं, शिखा रतन जी भी हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इससे कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कभी इंडिया में वैक्सीन आएगी? यदि आएगी तो कब शुरू होगी? और क्या हमें कंसर्न होना चाहिए कि अभी ऐसे बच्चों को वैक्सीन लगी ही नहीं, तो हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? अभी आज की तारीख में 12 से ऊपर वाले बच्चों को हमारी कंट्री में वैक्सीन्स लग रही हैं। सो 12 प्लस बच्चों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। 18 प्लस बच्चों के लिए एडल्ट जैसी वैक्सीन्स हैं। सो वैक्सीन्स अभी 12 एंड अबव बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल हैं, लग रही हैं और सभी बच्चों को लगवानी चाहिए। एज के हिसाब से वैक्सीन की चॉइसेस अलग हैं। कुछ वैक्सीन्स हैं जो एडल्ट्स में लगती हैं, वो बच्चों में नहीं लग सकती, और कुछ वैक्सीन्स हैं जो यंग बच्चों के लिए अप्रूव्ड हैं। तो जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वो लगनी चाहिए। इंटरनेशनली 5 ईयर प्लस कई बच्चों को कई वैक्सीन्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और जो लग रही हैं। हमारी कंट्री में अभी 12 प्लस के ही एज के लिए वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं, और ये सारी अप्रूवल्स या जैसे जैसे धीरे धीरे एज कम की जा रही है, ये रिस्क और बेनिफिट रेशियो के हिसाब से है। कितनी गवर्नमेंट के पास वैक्सीन की सप्लाई है, किस एज ग्रुप को रिस्क सबसे ज्यादा है, कौन से ग्रुप्स को पहले वैक्सीनेट करने की जरूरत है। दीज आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर डिसाइडिंग कि किन बच्चों को या किन एज ग्रुप को वैक्सीन देनी चाहिए। क्योंकि यंगर बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर नहीं होता है और माइल्ड होता है, वो प्रायोरिटी में थोड़े पीछे हैं, और इसीलिए बहुत यंग एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए अभी हमारे यहाँ वैक्सीन अप्रूव नहीं है। बट धीरे धीरे इवेंचुअली विद टाइम ये वैक्सीन भी अप्रूव होंगी, छोटे बच्चों के लिए भी आएंगी। बट आज की तारीख में 12 प्लस के बच्चों के लिए ही वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं और उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। जैसे जैसे वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी, बाकी बच्चों में भी जो वैक्सीन जिनको नहीं भी लगी है उनको भी एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलती है। अगर हम वैक्सीन इस वायरस का स्प्रेड किसी भी तरह से रोकते हैं, अगर 100 लोग एक कमरे में हैं और उसमें से 20 बच्चे हैं और हम 80 लोगों को अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम स्प्रेड फिर भी रोक रहे हैं। तो इससे उन बच्चों के भी वैक्सीन ना लगने के बावजूद प्रोटेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो वैक्सीन जिनके लिए अवेलेबल है उन्हें जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस और सीवियरिटी के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए अभी वो प्रायोरिटी में नहीं है। जब इवेंचुअली धीरे धीरे उनके भी वैक्सीन आएंगी और वो अप्रूव होंगी, जब वो अप्रूव होंगी तब हम उन बच्चों को भी वैक्सीन लगाएं। बट आज अभी 12 साल से ऊपर बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाई जाए। जी, रेखा जी हमें पूछ रही हैं, रेखा संपत पटेल, दैट कैन यू प्लीज गिव सम नेम्स फॉर 12 years and under 12 years? She means the vaccine names, the newer ones which are available in India. Under 12 India में there is no vaccine available. Over 12 there are 2-3 which are approved, but as of now in practice or in circulation, the Corbevax is the only vaccine which is approved for children beyond 12 years of age, and that is a 2-dose schedule about a month apart. So 28 दिन के अंतराल पे 2 वैक्सीन डोजेस ये लगती हैं इस कोर्बेवैक्स वैक्सीन की। जी, बिल्कुल, और गवर्नमेंट सेंटर्स पे इज़िली अवेलेबल है, आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं और आसानी से ये वैक्सीन जो है लगा सकते हैं। ये भी सवाल है कई पेरेंट्स का कि एक अगर डोज़ लग चुकी है तो कितना प्रोटेक्शन होता है उनके बच्चों को, क्योंकि दूसरी डोज़ में अभी टाइम है, और क्या 1 हफ्ते से दूसरी डोज़ डिले की जा सकती है कई किसी भी कारण से? सो 28 दिन का रिकमेंडेड गैप है 2 डोजेस के बीच में। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 28वें दिन पे आप नहीं लगवा पाए तो आप नहीं लगा सकते। अगर आप किसी वजह से 1 महीने बाद आपने नहीं भी लगवाई है तो अर्लीस्ट पॉसिबल चांस पे आपको लगवाना चाहिए, चाहे वो 1 हफ्ते बाद हो, 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, जब भी पॉसिबल हो ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इसको सेकेंड डोज को हम
बूस्टर डोज मानते हैं, जिससे उसकी एफिकेसी बढ़ती है वैक्सीन की। तो एक सिंगल डोज से भी प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल्स पे नहीं होती है, और सेकेंड डोज के बाद वो ऑप्टिमम लेवल्स तक या काफी अच्छे लेवल्स तक प्रोटेक्शन आ जाती है। जी, इसी के साथ पूनम किशोर वर्मा जी इज क्वाइट अफेक्टेड विद द नॉन फॉलोइंग ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इनसाइड द स्कूल्स। पूनम जी, जैसे हमने देखा है, इतने छोटे बच्चों को काबू में रख पाना और उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाना कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन जैसे सर ने समझाया कि आप अपने बच्चे को घर में बिठा के समझा सकते हैं। यदि आप बार-बार उन्हें समझाएँगे, अच्छे से बताएँगे, तो बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अगली बार वो चीज़ वो ज़रूर करेंगे जो आपने उनको बताई होगी। हम सबको ये कोशिश करनी है एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स, कि सबको बार-बार यही चीज़ हम बार-बार बताते रहें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कितना ज़रूरी है। लेकिन आप इस चीज़ से इतना डर रही हैं कि अपने बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजना चाहती, लेकिन सर ने ये काफ़ी अच्छे से समझाया कि इसके अपने इल इफ़ेक्ट्स हैं, जो सोशल इंटरैक्शन बच्चों की नहीं हो रही है, उसके इफ़ेक्ट्स भी लाइफ़ लॉन्ग है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक छोटे वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट कर लें। तो ज़रूर उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाएँ, बार-बार सिखाएँ, हर रोज़ सिखाएँ, ज़रूर वो फ़ॉलो करेंगे। I would like to take some quick questions if there are any, because there is a lot of repetition in the questions. Certain people have actually joined very late. So, again, those questions less than 7 years. We have already spoken that there are no vaccines available at the moment for less than 12 years. And also, Shikha Ratanji wants to know what should the kids do while eating lunch. We have already told this, that if your child is eating the lunch in school, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको अपने बच्चे को समझाना है कि कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स से आपको दूर होना है, क्योंकि उसी समय जो है मास्क आपका नीचे उतरता है और कोविड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। Manpreet Kaur ji is asking if their child who is more than 14 years of age can get Covaxin. I don't think 14 years, they're only getting Corbevax. सर ने हमें ऑलरेडी बताया है कि कॉर्बेवैक्स ही ऐसी वैक्सीन है जो अभी इस एज ग्रुप के लिए जो है अवेलेबल है। पूनम किशोर जी, हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ बच्चे हैं जिनमें कोवैक्सीन लगी हैं, जो कि 15 और 16 साल के ऊपर की उम्र के बच्चे थे, लेकिन इससे कम उम्र के बच्चों को केवल कोर्बेवैक्स ही लग रही है। Rekha Sampath ji is asking, what about those who have taken Covaxin? Eventually, they already show high rise from the number of cases. I think she wants to say that people might be vaccinated in the past, but still there is increase in the number of cases. Rekha ji, we would like to tell you that even if patients are getting affected again and again in every possible wave, but those who are vaccinated are not getting any kind of severe infections. So please take your vaccinations. I don't think there are any new questions at the moment. So with this, I would like to thank you from the bottom of my heart on behalf of all the people who are connected here with us on this show, which is a non-stop show, Dr. KK's Med Talks. We thank you, and a small token of appreciation from our end for you, sir, in your already decorated cap. There is a small certificate from our end for joining us on this evening on a hot summer day. Can you Thank you so please much. show the certificate, Pratik? Just show the certificate. Thank you Thank so you much, so much. Dr. Nambi. It's my pleasure and very honored to be on your show. थैंक यू सर। सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क का पहनना और मास्क का अप्रोप्रिएट तरीके से पहनना, अपनी नाक और मुंह के ऊपर दोनों चीज़ों को ढकना बहुत अनिवार्य है। लोगों से दूरी बनाए रखना, स्पेशली ऐसी जगहों में जो क्राउडेड जगहें हैं, और अपने हाथों को बार-बार साफ करना, स्पेशली अगर आप अपने हाथ जो है आँख, नाक और मुँह को लगा रहे हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अपनी वैक्सीन नहीं लगाई है या आपके बच्चे की वैक्सीनेशन जो 12 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो नहीं लगी है, तो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में जाएँ और वैक्सीन ज़रूर लगाएँ।
वैक्सीन के बाद इस चीज की गारंटी नहीं कि आपको दोबारा कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस चीज की 100% गारंटी है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, जिससे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या फिर आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़े। ये चीज हमने साफ तौर पे देखी है, और पॉलिटिक्स में ना पड़े प्लीज। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वैक्सीन नहीं है, ये साइंटिस्ट की वैक्सीन है। हमारे साइंटिस्ट ने काफी मेहनत की है, इंक्लूडिंग इंडियन साइंटिस्ट ने, और एक अच्छी वैक्सीन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसकी इफेक्टिविटी हमने प्रैक्टिकली देखी है एज डॉक्टर्स inside the ICUs and inside our hospitals. I thank you all for joining us this evening. Jai Hind and Namaste.